तो हे गाइस, दिस इज योर कार्तिक एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KS राइड। वेलकम फ्रॉम कोयम्बतूर। तो हमने शुरू किया था ये राइड जबलपुर से पुणे, पुणे से चेन्नई के बाद हम गए थे कहाँ गए थे यार, बहुत सारी जगह गए थे, वो देख लेना आप प्लेलिस्ट में। और अभी हम करंटली हैं कोयम्बतूर में जा रहे हैं अभी ईशा टेम्पल, जहाँ पे आदि योगी मिलेंगे जो बहुत फेमस है, रील्स में वीडियोस में ये सब मिलते हैं। तो बहुत सारी जगह हम जा सकते थे, उसको स्किप करके हमने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ की एक बार खूबसूरती देखो इस रास्ते को ही। और मंदिर 4:30 से 7:30 के बीच में रहता है। तो अभी हम रूम लेंगे मंदिर के आसपास ही और अपने गैजेट्स को सबको चार्ज करेंगे और मस्त टाइम लैप्स से लेके वीडियो से लेके सब लगाएंगे, सब दिखाएंगे आपको, सब दिखाएंगे। ये देखो गाइस, यहाँ पे आंटी लोग चलाती हैं लूना। अभी भी हमारी चुच्चू आंटी भी ऐसी चलाती थी। ओ मैक्सी पहन के आंटी चला रही है लूना। अल आंटी नहीं दीदी है। ओ माय गॉड गाइस, एक होम स्टे देखने के लिए आए हैं हम लोग। अभी यहाँ से 7 किलोमीटर है ईशा। प्रॉपर्टी तो यहाँ पे बहुत गजब की है, एकदम गाँव वाला फील है यार ये तो बिल्कुल भाई। और ये भी है यार, ये भी मस्त है, ये भी जबरदस्त है। अगर मिल जाता है तो सही है यार, सही 60 पैसों में। इनका गेट कहाँ बनाया है भाई, खेतों में इसने। हो गए वो तो घर में ही होंगे होम स्टे वाले। अबे किसी का घर तो नहीं है भाई? नहीं, होम स्टे ही। गाइस होम स्टे की तलाश जारी। वो वाले में जा रहा हूँ मैं, पहले ये वाला देखे। यहाँ खड़ी है गाड़ी, पवन गया इस वाले में। कुछ हो ना हो, मिले ना मिले, जगह कितनी मस्त है ना। ये देखो नारियल के पेड़। वेलकम बैक चैनल पवन। और मैं यहाँ वादियों के बीच में लेटा हुआ पड़ा हुआ। अबे जाना कहाँ से? ओ मेरे भाई वहाँ से है गेट। ओ चाचा, अबे पीछे से कहाँ लेके जा रहा है, आगे से चलना है। ओरे भाई सुंदरता तो लेकिन यहाँ पे अलग लेवल की है, ये तो है यार। देखो पूरे पाम ट्रीज है। देखो सब बोलते हैं बाइक से क्यों घूमते हो, बाइक से क्यों जाते हो। अगर बाइक से ना आते तो हम ये सब सुंदरता ना देख पाते हो, ना आप सब किसी को दिखा पाते, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे दिखाया नहीं। तो कम से कम मैं दिखा रहा हूँ तो उसी को देख लो, है कि नहीं है। ओ भाई ओ बॉयज, फाइनली रूम मिल गया है अपन को। ये है कुछ ऐसा रूम, 1600 रुपए में। सही है। ये देखो इतना बड़ा रूम है, क्वीन साइड बेड है। वेदांता आई थिंक, छोड़ो बाद में दिखाऊंगा जाते टाइम। तो गाइस देखो भीड़, ये आ रहे हैं बस भर के लाइट शो देखने के लिए। और यहाँ से एंट्रेंस होती है, तो एंट्रेंस में चलते हैं अंदर, दिखाते हैं स्टैच्यू। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली वी रीच्ड दिस आदि योगी एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं भी आपको, ये देखो। और यहाँ पे खाने के लिए बहुत दिक्कत है, तो पहले से ही लेके आओ पहली बात तो। बारिश हुई तो कुछ भी शेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी इशू है। और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज हाउ वी हैव दिस आदि योगी। अभी गोप्रो में बहुत छोटा दिख रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ एक बार फ़ोन से। ये देखो गाइस, ये है अपने आदि योगी। ओके, दिस इज़ रियली वेरी नाइस। एंड अभी यहाँ की जो भी कुछ कथा है, हिस्ट्री है, या फिर हिस्ट्री तो वैसे कुछ है नहीं, और जैसा भी है सदगुरु ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो सब बताते हैं। और अभी लाइट शो भी होगा। गाइस मैं दिखा रहा था कि यहीं पे खाने को सब मिलता है, ये सब शॉप्स हैं। तो ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा था, ख़राब तो कुछ भी नहीं था। मैं भी जा रहा हूँ बस चाय लेने, खा लिए हम लोगों ने समोसा। भाई मौसम बदलने लगा, लेकिन देख रहे हो। तो गाइस लाइटिंग शुरू होने वाली है और मैंने टाइम लैप्स लगाया है, देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड होता है। और बाकी कैमरे से रिकॉर्ड करूँगा मैं। गाइस अंधेरा हो गया पूरा, अब चालू होने वाला है लाइट शो।
16,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. So this spectacular being were unknown. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. Upon his unbridled wild hair, it was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adi Yogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Him is woman.
splendor of this magnificent union. Across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. However, the Adiyogi premises is open. கலை நிகழ்ச்சிகளும் ஆதியோகி திவ்ய தரிசனமும் ஆதியோகி வளாகம் திறந்திருக்கும்